चलिए सर स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, अभी तक 1 घंटे पहले जिसने लिखा है उसका तो अभी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 5 people who have written and submitted the test. Let's start with the मौर्य का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन। ओके, तो हम एक एक आंसर उठाएंगे रैंडमली। So Maurya has written on the second essay topic, that is poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. बहुत सिंपल सा ऐसे टॉपिक है, बहुत सिंपल सा ऐसे होने वाला है। एंड आई एम ग्लैड कि मौर्य ने सिंपल सा टॉपिक चूज़ किया है, बिकॉज ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एसे ट्राइंग टू आस्क यू, कीवर्ड्स क्या हैं, वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. Poverty is the first keyword that we have. Poverty anywhere. So poverty, poverty, poverty. That's the most important keyword here. Is a threat to prosperity. So that is the second keyword that we have. हम सीधा सीधा बोल सकते हैं poverty is a threat to prosperity. That's it. Anywhere, everywhere are words that can be removed. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. So we can directly say that poverty is a threat to prosperity. So the harmful effects of poverty, that is what we have to write on. अगर हम इसको summarize करें, छोटा करें, अपने words में करें, then we can come to this conclusion. The harmful effects of poverty. How poverty affects prosperity. How poverty comes in between prosperity and us. That is basically what the examiner is asking. Poverty is the most important keyword here, so we can start with that in the introduction. मैंने आपको बताया था what or why. These two things can be mentioned in the introduction. What is poverty? How do we measure poverty? That can be written. Or we can also talk about why poverty exists. That can also be mentioned in the introduction. Body में हम लोग बात करेंगे how poverty is a threat to prosperity. How poverty affects prosperity. Okay, किस तरह से poverty हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल हैप्पीनेस के रास्ते में आती है. हाउ डज इट कम इन द वे ऑफ आवर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल डेवलपमेंट. एंड कंक्लूजन में वी कैन जस्ट समराइज और वी कैन गिव अ वे फॉरवर्ड कि पॉवर्टी को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं और व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन इवन नाउ टू रिमूव पॉवर्टी. स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी what Maurya has written. A line is straight only if all of its points lie on the same line. A single misalignment of a point will break the continuity. The same principle applies to the poverty and prosperity. Even if a small community of people is left behind, the holistic prosperity of country will remain a mere dream. In economic terms, poverty means low savings rate and low income level of an individual, hampers access to basic facilities like clothing, food, shelter and sanitation, which is a threat to prosperity. Good enough introduction, I can say. ठीक है. पॉवर्टी की डेफिनेशन में आपने बस सेविंग्स और इनकम को लिया है. इट कुड हैव बीन मोर होलिस्टिक, बट आई थिंक उसके बाद यू हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज एज वेल. सो इट्स अ गुड डिसेंट इंट्रोडक्शन. आई रियली लाइक इट. आगे देखते हैं व्हाट हैज़ Maurya mentioned in the body of the essay.
Prosperity as a whole is a multidimensional aspect which can be disrupted due to hurdles like poverty. Prosperity is not measured only economically, rather it is a state of being economically, socially, politically stable. Yes, its indicators are lesser inequality, uh, proper sanitation, better education, decent employment level, and a healthy environment to sustain livelihood. Persistence of poverty in an economy can threaten each of these aspects at every stage. For example, an individual who is poor will have to do manual work, which pays him less than what, and that makes him vulnerable to all the basic amenities such as health, sanitation, education. Lack of these facilities will threaten the security of upcoming generation. Vicious cycle of poverty starts. बहुत सारे पॉइंट्स आपने मिक्स कर दिए यहाँ पे. नंबर वन, you are showcasing it as one point because it is just one paragraph. That's a mistake. Please don't do that. Okay. Multiple points, multiple paragraphs, all the arguments, all the different paragraphs should have one argument, one single focus. हर एक पैराग्राफ में एक सिंगल फोकस होना चाहिए. That's very important. For example, we could have said, yes, poverty is a threat to prosperity. Why or how? Why की बात नहीं करेंगे. In the body, we are focusing on how. How is poverty a threat to prosperity? Number one, जो आपने लिखा है, if you are poor, then the basic facilities, basic necessities of life are unavailable to you. That's one argument. उस एक argument को आप एक पैराग्राफ में डालेंगे. That's it. You probably can give some example how a person who is poor does not have access to basic facilities of life. Okay, and that results in less prosperity. That results in limited prosperity. Okay. Second point ऐसे ही हो सकता है. How poverty can affect overall development of an individual. फ्रीडम नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंस नहीं है, द एबिलिटी टू रियलाइज योर कैपेबिलिटीज दैट इज मिसिंग. कोई एक गरीब बच्चा है, नंबर वन फॉर एग्जाम्पल, तो ही डज नॉट हैव, लेट्स से ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, बट ही डज नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. तो उसको क्योंकि एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं मिला, ही इज़ नॉट एबल टू डेवलप ऑन हिज कैपेबिलिटी एज एन इंटेलिजेंट पर्सन. वो स्मार्ट था, उसके अंदर टैलेंट था, बट ही कुड नॉट डेवलप ऑन इट. सो दैट इज़ वॉट poverty resulting in limited prosperity or reducing prosperity, ना. तो ये एक अलग argument हो गया. This is another argument. Third probably is if there is poverty in, let's say, Uttar Pradesh. So we're talking about anywhere and everywhere now. So this is third dimension. If there is poverty in Uttar Pradesh, that affects prosperity somewhere in Kerala as well. Okay, क्योंकि लोग वहाँ से migrate करते हैं, कहीं और जाते हैं, और there's too much pressure of population in UP. There's too much pressure of limited prosperity, underdevelopment in UP, and that has a monetary, a social, a political impact on something like, let's say, Tamil Nadu as well. Okay, तो इसका भी example देके आप prove कर सकते हैं इसको. So this is another dimension that we can open up, that poverty in one place, spatial classification हो गया है, poverty in one place can have an impact on prosperity in another state or another country as well. Okay, ऐसे ही 3-4 dimensions आपको खोलने ज़रूरी थे. That is when you can get good marks. अभी problem क्या हुई है? The introduction is good, but the body is just one dimension, just one example, just one idea, presented together. मल्टीपल आइडियाज आपने डालने की कोशिश की है, यू हैव ट्राइड, बट यू हैव मिक्स्ड इट अप इन वन पैराग्राफ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन बिग आर्ग्यूमेंट. दैट्स द प्रॉब्लम. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. Provisions like NFSA, PMGKY was launched to provide food security. Along with that, the government has provided support to poor and marginalized farmers. Regardless of all these efforts, poverty and inequality still prevail. Top 1% of the population has more than 50% of the wealth. To mitigate this unequal status of country, intervention at ground level is necessary. Education and healthcare facilities need to be improved so that the future of upcoming generations can be secured. Also, development of basic infra
टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। बहुत ज़्यादा स्पेस आपने इसमें लगा दिया है, इतना स्पेस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए आप जितना जितना आपका बॉडी है उतना ही आपने बेसिकली इट्स लाइक कंक्लूजन। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड how much space are you spending on every part of the essay. Okay, body, less dimensions, less weightage in terms of words. Okay, so I have to give you about 50%, even though the essay is good, but the problems in the structure, the problems in the way you have spent the amount of words that you've spent on body and conclusion and introduction, that structure, that balance is missing. Okay, जो मैंने आपको explain किया है. Let's come to another one. अभी बहुत सारे लोगों ने दे दिया है, आरजू का उठाते हैं. Let's pick up. Okay, second. Let's pick up the reading comprehension. I hope she's fine with it. Okay, so this reading comprehension is about blockchain technology, जो question से भी दिख रहा है. What is blockchain? How will it boost innovation? How is blockchain technology going to enhance education sector? What are the various factors for strengthening digital education ecosystem? First answer पे आते हैं. What is blockchain? How will it boost innovation? The term blockchain is made up of two words, block and chain. In blockchain technology, data is stored in form of blocks, and these blocks are connected together to form a chain. It distributes exact copy of blockchain to each computer connected to the network. Any change in the data has to be approved at least half of the computers. Thus, data is always secured in blockchain. It also solves the data duplication. With the presence of IoT and cheap computing, can boost innovation. It can be used in payment systems, education, etc. How will it boost innovation? उस पे थोड़ा सा और अलग तरीके से you could have talked about it in points. How will it boost education, innovation? Okay, otherwise it's good enough. How is blockchain going to enhance education? Blockchain can revolutionize the education. It can manage student records. Students' records like assignments, attendance, extracurricular, various degree can be maintained in a secured manner. It can be used by recruiters and institutions. Teachers' records. Blockchain will also recognize any fault. It will be very efficient. Good enough. But again, देखिए जब आप points में लिखते हैं तो answers are better in points. So you could have first introduced how blockchain can enhance education sector. जो आपने एक sentence में लिखा है, it could have been 2-3 sentences. It can revolutionize, it can transform, it can get rid of a lot of problems that we face today in the education system. These are the following are some of the ways in which blockchain can improve the education sector in India. Number 1, number 2, number 3, number 4, something like that. Okay, that would have been more impactful. Various factors for strengthening digital education. There are several aspects to strengthen digital education, like content development, teaching, evaluation, attendance. With blockchain, various stakeholders like institutions, mentors, recruiters can be integrated into the DEE. The data will be very secured and information can be given to stakeholders. Good enough. I think I can give you 60%. Improve हो सकता है. Okay. Second. Use points with a detailed intro to improve your answers. This is something that can be done by Arzu. चलिए, let's come back. प्रसन्न कुमार का उठाते हैं. So I'm picking up the essays that were submitted the first. वो बहुत important है. Okay, let's pick up Prasanna ka. Let's pick up the essay. Global warming and climate change, a colossal crisis in making. Okay. तो essay क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या what is the expectation of the essay, the topic?
ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे एक साथ आ जाते हैं. A colossal crisis in making. How is global warming and climate change a crisis that we face, but we fail to uh, do anything about it, right? So, what exactly is the essay trying to ask you? How is global warming and climate change a crisis that probably we are going to face in the future? What are the different dimensions, different ways in which we can say that global warming and climate change are a crisis for India, right? Or for the entire world, because यहाँ पे India word use नहीं किया हुआ है. Let's see what Prasanna has written. It's a difficult topic, but अगर आप इसको simplify कर पाते हो, if you can compress it, then it can be answered well. Nature has the capacity to satisfy needs of man, but for man with greed, it is impossible. क्या महात्मा गांधी ने एग्जैक्टली यही बोला है या फिर नहीं बोला है? क्योंकि आपने कुछ तो मिक्स किया है, मुझे ऐसा लग रहा है. लेट्स गूगल एंड सी. ग्रीड वाला ऐसा कुछ नहीं बोला है. तो व्हेन यू आर कोटिंग समवन, देन मेक श्योर the earth is sufficient to satisfy everyone's need but not the greed. Okay, so when you are writing something by you're quoting somebody, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जैक्ट लाइन लिखो, ठीक है. अदरवाइज डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर. नाउ कोई कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस बारे में, एंड दे डोंट लाइक इट कि आप चेंज कर रहे हो स्टेटमेंट को या आपने वर्ड्स में लिख रहे हो. ओके, यू कैन सेड महात्मा गांधी quoted or Mahatma Gandhi talked about global warming by saying that nature has the capacity. तो आपने that लगा दिया, आप उनको quotes में नहीं डाल रहे हो, automatically it becomes your own. Okay. From the above quote, it is evident that environment and biodiversity provide resources to mankind, but if overexploited, it will result in negative impacts like global warming and climate change, which in recent times are at an increasing rate. थोड़ा grammatical error है, otherwise it's good. I like the introduction. To understand the origin, we need to know about the evolution of landmass and life on Earth and what changed in the contemporary world. Before that, let us understand what global warming and climate change actually means. While global warming is the gradual increase in the temperature, climate change is long-term output of global warming, which changes the weather and climate based on the changed environmental phenomena. Initially, it is evident from our history that it took more than a million years to create the present shape, and in every succession, there has been a catastrophic weather event which changed the affected the world. But all these processes are natural, and man has less or negligible role. ये भाई आपसे पूछा नहीं है, आप जो भी सब बातें कर रहे हो. See, this is the problem. I believe the way you're writing, I might be wrong, but I feel that you're a UPSC aspirant. तो आपने यहाँ पे गलती क्या करी है, या वो सेम स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हो. सेम स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, फॉर द सिंपल रीज़न दैट यू हैव टू राइट इन 400-500 वर्ड्स, नंबर वन. और यहाँ पर चेकिंग अलग तरीके से होती है, वहाँ की तरह नहीं होती है. वहाँ पे आपको 1000-1200 वर्ड में लिखना है. हेयर यू आर राइटिंग इन 1/3 ऑफ दैट वर्ड लिमिट. यहाँ पे यू हैव टू स्टिक विद व्हाट इज बीइंग रिटन, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ग्लोबल वार्मिंग इज अ क्राइसिस. हिस्ट्री, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग इज स्टिल फाइन, बट ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, हमारे पास्ट में कैसे हुआ है, दैट इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड. वो सब आपसे नहीं पूछा है, ठीक है ना. हिस्ट्री में ज़्यादा ना घुसें, ज़रूरत नहीं है, इतना स्पेस नहीं है आपके पास. In addition to that, there are various other factors like change in nature of agriculture, over exploitation of resources. With the advancement in automobile, the pollution has seen drastic increase. Poor waste management, recycling, these are evident with the fact provided by UNFCCC that the world temperature has increased by 1%, and if no measures are taken, the world will have an increase up to 3%. It causes the emergence of new diseases and usual rainfall pattern, adversely affecting food security. अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है. क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछा है, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज अ क्राइसिस इन द मेकिंग. ओके, how, I'm repeating, how is global warming and climate change a crisis in the making. तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से ऐसा क्या होगा
what will happen that we are calling it a crisis? ये पूछा है ना, this is what is being asked. सबसे पहले ये समझना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. सामने वाला इंटरव्यूअर, लेट्स से यू सिटिंग इन एन इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट्स योर नेम, और आप बोलते हो आई लिव इन हैदराबाद, आई हैव स्टडीड इन हैदराबाद टिल क्लास 12th, आफ्टर दैट आई मूव टू IIT बॉम्बे, आई लव बॉम्बे एज अ सिटी, आई वांट टू सेटल डाउन देयर. क्या बोलेगा इंटरव्यूअर? Are you listening to what I am asking? I am asking you what's your name, and you're talking about all different kinds of things about you, but not telling me your name. Probably because your name is funny, so you don't want to reveal that, something like that. But the center here is, what I'm trying to say is, answer what is being asked first. Then, if you want to talk about other things, you can, if you have the space. But first, answer what is being asked. यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? Very simple. How is global warming and climate change a crisis? क्यों हम ऐसा बोल पा रहे हैं? How can we say, how can we conclude that global warming and climate change is a crisis in making? हमारी जो एग्रीकल्चर की जो लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी, अगर हम नेचुरल प्रोडक्टिविटी देखें तो वो it is dropping, if because of extreme weather events, because of falling quality of the soil. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्राइसिस है. फूड ही नहीं होगा लोगों के पास तो करेंगे क्या? हाउ विल बी सर्वाइव? अगर हमारे पास फूड नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया था, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिंपल मूवीज. कि इंटरस्टेलर में जिस तरह से दिखाया था, पीपल कैन नॉट ग्रो फूड एनी मोर. वाई? बिकॉज the climate, the weather does not support it anymore. Okay, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि भाई क्यों क्राइसिस है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग our food will get affected. If we don't have food, we cannot survive. Number 2, extreme weather events. How will man survive if temperature starts falling to, let's say, -30? या फिर there is a sudden rise in oceans level. How will we survive? We are not meant to live on water. We are supposed to be living on land. We are mammals. तो हम लोग कैसे जिएंगे अगर सब जगह पानी हो जाएगा? That is again another one. Why is it a crisis in the making? Because it is destroying our habitats. Okay, it has the potential to destroy our habitats. Floods आ जाते हैं, earthquakes आते हैं. So these all are natural events जिनकी frequency बढ़ गई है. The frequency has increased. Why has it increased? Because of our intervention and interference in global climate. है ना? इस तरह से you could have come out with tangible points how you feel and believe that global warming and climate change is a crisis in the making. Okay? सिंपल आपको लिखना था, आपने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया उसको, इसीलिए नंबर नहीं मिलते हैं. आपको लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, बट एक्चुअल में यू आर नॉट राइटिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, यू आर राइटिंग व्हाट यू नो, व्हाट यू फील इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आपने बस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वर्ड पढ़ लिया, तो यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट रियो अर्थ समिट, स्टार्ट राइटिंग अबाउट UNFCCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. सब सारे वर्ड्स आप लिख दोगे, लेकिन आप वो नहीं एड्रेस करोगे जो पूछा गया है. ओके, देन ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट व्हाट हैज़ बीन डन. यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या क्या किया गया है. रियो अर्थ समिट चल रही है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल सोलर अलायंस हुआ है, वी आर ट्राइंग टू create carbon credits, so bring in money in the entire equation of climate change and global warming so that people take it more seriously. ऐसे बहुत सारे steps इंडिया ने और इंटरनेशनली लिए गए हैं, have been taken. So this can be your conclusion, but make sure कि आप बॉडी को इग्नोर नहीं कर रहे हो. Okay, you're writing what is being asked. Okay, please make sure that you do that. I'm going to give you 50% because of this problem. Okay, make sure that you don't make this mistake again. Okay, एक लास्ट उठा लेते हैं. Let's pick up our last one. नरेश ने फर्स्ट नहीं किया है, सेकंड नहीं किया है, थर्ड भी नहीं किया है. I don't know why
has Naresh submitted. साई चरित्र, ये इन्होंने भी नहीं किया है. सेकंड किया है. ओके, थर्ड भी किया है. लेट्स पिक अप द थर्ड वन बिकॉज यहाँ पे 3 क्वेश्चन. आई विल बी एबल टू गिव अ मोर डिटेल्ड फीडबैक. ओके, what is blockchain tech and how will it boost innovation? Blockchain tech derives its name from digital database or ledgers where information is stored in the form of blocks, and all these blocks are connected by a network. Any change of information in one block requires approval from more than half of the users. With the advent of Internet of Things, cheap computing, internet services, blockchain can help in innovation in a range of processes and applications requiring management. The problem with your answer is you are copying sentences directly from the paragraph. Don't do that. Okay. Copy ideas, don't copy sentences. Write it in your own words. It's very important that you write in your own words. But do not introduce new ideas unless वेरी नेसेसरी. नेसेसरी जब तक ना हो तब तक नए आइडियाज़ ना डालें. जो वट एवर आइडियाज़ हैव बीन गिवन इन द पैराग्राफ, प्लीज स्टिक विद दोज. ओके, हाउ इज ब्लॉकचेन गोइंग टू एनहांस एजुकेशन? ब्लॉकचेन कैन implement multiple entry and multiple exit, which is being promoted. It can also help in maintaining quality of educators and students through skill badges. It can be used to design a scholarship system to incentivize students to maintain consistency. Again, copy किया है आपने यहाँ पर भी. It could have been written in a much better way in your own words. Blockchain technology has the potential to evolve, enhance, and promote our education sector so that everyone can be educated in the future. ऐसे introduce कर सकते हो आप. Okay. There are multiple ways in which blockchain technology can improve our education sector. Some of them being slash and then you start with points. Firstly, it can help by introducing multiple entry and exit systems. Number 2, students can be given badges which can help identify the quality of both students as well as teachers. Thirdly, scholarship system can be more scientifically designed so that people students who actually need a scholarship are the ones who get them at first instance. इस तरह से आप अपने words में लिख सकते हो. You can pick up ideas from the paragraph and write it in your own words. Okay, please make sure that you do that. ये बहुत ज़रूरी है. चलिए, so this was all. I am going to give you about 30-40%, 40%. Okay, not more than that. Please keep working on how you write. Regularly लिखिए please. I have a session tomorrow as well at 8 AM. उसको प्लीज़ अटेंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लेवल्स में चेंजेस देख रहा हूँ. आई कीप सिटिंग विद मनीष सर एंड वी ट्राई एंड इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टूडेंट्स राइटिंग्स, और हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. इट्स बीन जस्ट 3-4 days since we started writing again and I can see a lot of change. तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली लिखें. ये चेंज या फिर इम्प्रूवमेंट देखने के बाद वी हैव डिसाइडेड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट एग्ज़ाम, अभी जो RBI होगा, नाबार्ड तो अभी चल ही रहा है, सो वी आर राइटिंग एवरी डे. वी हैव डिसाइडेड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट एग्ज़ाम RBI होगा और सेबी होगा. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लिया है कि हम फेज़ 1 ख़त्म होते ही, as soon as phase 1 finishes, we completely shift to answer writing, essay writing and objective test writing. और हम पूरे 1 महीने जो भी हमें टाइम मिलता है between phase 1 and phase 2, we do this. We help you write answers every day, we help you write essays every day, and we help you write objective test also. उसको भी analyze करना आप शुरू करेंगे. Morning में we can have sessions on answer writing and essay writing. In the evening we are going to have sessions on objective tests. ये हमने डिसाइड किया है बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज, उनकी राइटिंग की क्वालिटी में, और बहुत इमीडिएटली देखने को मिलता है. 2-3 दिन आप लिखोगे, इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट दिखता है. और उसमें मैं चेक भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि लाइव राइटिंग होती है. जैसे आज सारे नहीं चेक हुए, सारे चेक नहीं हो पाते हैं, बट
द फैक्ट दैट यू आर जस्ट राइटिंग एवरी डे, उसी से हमें दिख जाता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है. ओके, तो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कीप राइटिंग एवरी डे. और जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ बताए हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के आंसर्स चेक करके, दोज पॉइंट्स आर रेलिवेंट फॉर योर आंसर ऐसे एज वेल. ओके, तो उसको मैच करके समझ के यू कैन मेक चेंजेस इन योर राइटिंग एज वेल. चलिए, वील सी ईच अदर टुमारो मॉर्निंग अगेन एट 8 AM. कल सुबह हम लोग ESI एंड ARD की लाइव राइटिंग करेंगे एंड आई विल इवेलुएट सम ऑफ दी tests tomorrow morning as well. 9:30, 8 to 9:30 we'll write, and 9:30 I'll start with evaluation. Okay, chaliye, see you tomorrow morning again. Bye bye, take care, all the best, keep preparing.